Hi friends, welcome to my channel. Today I'll share my stay at Maha Bodhi hotel. We stayed only one day. रूम कैसा था, What did we have for breakfast, ये सब मैं शेयर करूँगी आज की वीडियो में। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। We stayed at the Maha Bodhi hotel when we were traveling to Kolkata. It's a 4-star hotel and one of the best hotels in Bodh Gaya. This is our room. We booked 2 deluxe rooms. पूरा दिन ट्रैवल करके हम सब बहुत थक गए थे, तो सोचा डिनर रूम में ही कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रात को काफ़ी लेट हो गया था तो प्रॉपर रूम टूर नहीं दे पाई। रूम में एंट्री करते ही लेफ्ट साइड में स्टोरेज स्पेस है। वी हैव अ टी कॉफी मेकर, अ बिग टीवी एंड अ राइटिंग डेस्क। We also have a small sitting area. This is the bathroom. Clean and spacious. रूम काफी बड़ा है। The room's interior design is simple and modern. I like the room. अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं। इट्स अ बुफे ब्रेकफास्ट। The breakfast area is very big with colorful sitting areas.
चलो देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या क्या है। वी हैव वाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, मफिन्स एंड croissants। फ्रूट्स में पपाया एंड वाटरमेलन भी है। वाटरमेलन जूस, बटर मिल्क, प्लेन पराठा, जीरा मसाला पूरी, मेथी आलू, आलू मटर की सब्जी, फ्रेश हर्ब्स पोटैटो, बेक्ड बीन्स, पोहा, आलू बोंदा, पाव and idli. Breakfast was very delicious. After this tasty breakfast, we go outside for a few minutes to see the surroundings. फिर जल्दी से हम रूम में आ गए क्योंकि हमें निकलना भी है आसनसोल के लिए। We are ready to start our journey. First, we will visit some temples here in Bodh Gaya and then we will go to Asansol. In my next video, I will share the places I visited in Bodh Gaya. Till then, bye.